कुछ हो गया हाँ हो गया, आगे पीछे हो गया तो ठीक हो है, गया। कोई बात नहीं कोई बात नहीं. तो सर प्लीज Yeah, can you मैं तो यही हूँ. get the spotlight? Yeah, fine. So we have actor, dancer, comedian Javed Jafri, sir. You wear a lot of hats. Sir, tell us about your experience in the show. यार मेरा पहला एक्सपीरियंस वाज विद सिद्धार्थ कुमार तिवारी. नाउ दिस मैन, इनका जो पैशन देखा मैंने, तो वो मुझे इतना मतलब इमीडिएटली आई सेड यार ये शो मुझे करना है. बिकॉज आफ्टर आई रेड द सिनॉप्सिस ऑफ द शो, फिर मेरी मुलाकात हुई और सिद्धार्थ से जब मैं मिला और मैंने जिस तरह से, जिस डिटेलिंग में और जिस पैशन से, कि वो एक शेर है इकबाल साहब का कि दिल से जो आवाज़ निकलती है असर रखती है पर नहीं ताकत परवाज मगर रखती है, विच मीन्स फ्लाइट. परवाज मीन्स फ्लाइट. सो नहीं यार उससे थोड़ी शेर मारता है कि ताली मारो, बट जो दिल से जो आवाज़ निकली है और सिद्धार्थ कुमार के दिल से ये आवाज़ निकली है. एंड आई फेल्ट that this is a show I must do. When I read the entire script and with the narration, it was an amazing script because it is so contextual, it is contemporary और हम relate कर सकते हैं जो आजकल हम देख रहे हैं. It's like a nuclear energy. ये जो social media है, you know, इसको या तो आप nuclear bomb बना लीजिए या उससे आप energy create करिए. So that is the only difference, and this can go either ways, the bright side and the dark side. और इसके base पर it is so मतलब कॉन्टेक्चुअल आज की जिंदगी में हम रिलेट कर सकते हैं हमारे बच्चों के थ्रू. सो आई फेल्ट दिस इज एन अमेजिंग शो एंड दिस स्टोरी नीड्स टू बी टोल्ड एंड द वे ही इज पुट इट टुगेदर विद ऑल द फॉर्म्स ऑफ एंटरटेनमेंट एंड मस्ती एंड धमाल एंड एवरीथिंग, एवरी फॉर्म ऑफ व्हाट वी कॉल व्हाट वर्क्स टू फॉर अ सक्सेसफुल शो और अ फिल्म दिस हैज. एंड मुझे लगा कि इसका हिस्सा तो मुझे बनना ही है डेफिनेटली. It's amazing. That's amazing. Have a seat, sir. Have a seat, please. सीट, Can everybody have a seat? सीट ले लेते हैं. कुर्सी की तो सब बात होती है हर जगह. I'm gonna have a seat too. Come. सिद्धार्थ का Hold. अच्छा. हाँ यार आपने बुलाया नहीं यार. मैंने उतना इंट्रोडक्शन कर दिया सिद्धार्थ का, इतनी बार बातें कर दी सिद्धार्थ के लिए और मैंने नाम में कंफ्यूजन हो गया मेरे को. इनके मैं भी ट्राई कर रहा हूँ इनके सिद्धार्थों पे चलूं. मैं भी वही ट्राई कर रहा था. यहाँ पे आ. One sec, we'll. Can you on please behalf have of the entire cast and crew, I think we've all heard these words: SKT, Sid sir, SKT sir, Sidharth Kumar Tiwari, Sidharth. round of order पे भी applause बोल दो. Sidharth Kumar Tiwari. Escape Live is here before you because of this man's mind and this man's heart and his brothers pushing from every direction. Rahul Tiwari, that's you. This is Sidharth Kumar Tiwari, the doyen of this show, the creator, the reason we're all here. And I'm so proud, and we all love him. We love you, SKT sir. Please, sir. Please welcome. Can you talk about the show a little bit? Can you talk about how it was working with this whole cast? That's a great question. ये जो अभी हुआ ना कि चेयर बाद में आई, माइक पहले गया, उसके बाद ये हुआ, ये कास्ट का एक सैंपल था जो अभी आप लोगों को स्टेज पे दिखा. तो ये रोज़ होता था मेरी लाइफ में. मैंने 120 दिन ये शो शूट किया अक्रॉस ऑल ओवर इंडिया विद सच डाइवर्स सेट ऑफ पीपल, सच डाइवर्स talented people. Currently I'm nice to you. Okay, should I be? अच्छा ऐसा क्या? ठीक है. सीने का मेजरमेंट नहीं देंगे हम लोग. No, firstly, good evening. Thank you everybody for coming here. बहुत सारे लोग इतने सालों से हम कोशिश कर रहे हैं अच्छे से कहानियाँ कहने की. तो ये वो कहानी है जो वो काफ़ी साल लगे इसमें समझने के लिए कि ये दुनिया क्या है और इस दुनिया के बारे में कैसे इस दुनिया की कहानी कही जाए. कि आज के टाइम पे जो दुनिया में मैं खुद रह रहा हूँ, वो दुनिया की कहानी मैं किस तरीके से कहने की कोशिश कर रहा था. सो इट्स बीन अ ग्रेट जर्नी फॉर मी. एस्केप लाइव हैज़ बीन अ लाइफ चेंजर फॉर मी. सो आई एम थैंक यू ऑल ऑफ यू. I think without you all, nothing would have been possible. It's impossible to just look at the people over here. The kind of people who chose to be a part of this show, of a part of this story rather. Why it's not just a show, it's a story. So all of you who decided to be a part of this story, all the people who are sitting here, a lot of people who are absent from here, I think each and every one, thank you Nikhil for believing, always day one, Nikhil said, let's do this show. So I'll never forget that. Until date, he told me 6 months, it's taken 3 years, 3.5 years, he's still standing with me. So 6 months mein main deliver nahi kar paya thanks to all the other variable factors in my life.
But thank you. I can see some people I love in the crowd as well. Thank you, Vibhaji, for being here. You know, and a lot of people. You know, thank you so much for coming here. I can talk a lot about my actors. काफ़ी टाइम लग जाएगा यहाँ पे इनकी अच्छाइयाँ बताने में. तो अगर आप लोगों को शौक है तो मैं बोल सकता हूँ. Yes, yes, yes. Please start. कहाँ से स्टार्ट Start करूँ? from Shweta. श्वेता के चेहरे पे ऐसा look, not me, no, don't start with me, you know. No, I start with my darky boy. Yeah. You know, here is one man, you know, ये एक ऐसा एक्टर है जो मुझे नहीं लगता है कि ऐसा कुछ नहीं है जो नहीं कर सकता है. You know, मुझे लगता है कि ये कुछ भी कर सकता है. जब मैंने इसे बोला कि तुम कृष्ण प्ले कर रहे हो, let's do darky, which is like the other extreme. I think the kind of preparation, darky boy, the kind of preparation Daki's done, the way he looked, the way he lived while doing television, I think that's quite commendable, you know. Daki boy, thank you so much. And Daki की असलियत ये है कि वो कहीं पे भी टाइम पे पहुंच जाए तो बहुत बड़ी बात होगी. आज मालूम नहीं कब आया है ये. अभी 5 मिनट पहले आया. आया ना, अभी पहुंचा है ना. हाँ, जस्ट टेक के जस्ट पहले पहुंचा होगा, you know. और फिर वो जो लाइन बोला होगा, जावेद सर भी सोच रहे होंगे ये स्क्रिप्ट में थी क्या. ये डाकी की खासियत है. जावेद सर भी सोच रहे होंगे सर ये एक्स्ट्रा लाइन कितनी बोली सर उसने. काफी सारी I बोली. was prepared. I'm always. He's darky sir. Once हाँ he's वो in the मैं zone. इसीलिए तो yeah. Yeah, he's always. Daki, you want to say one word about the show? What do you want to talk about the show? The show is excellent. Yes. मतलब I feel really good to be a part of this show. ये मेरा सौभाग्य है कि मैं एक साथ इतना डाइवर्स कैरेक्टर प्ले कर पा रहा हूँ. थैंक यू सो मच सर. मेरा आर्ट, मेरा क्राफ्ट, मेरी क्रिएटिविटी जिस हिसाब से बूस्ट हुई है इस अपॉर्चुनिटी की वजह से जो आपने दी. थैंक यू सो मच सर. थैंक यू. ये जो इंसान बोला ये कौन था? You know, the way you transform yourself. कृष्णा जी आ गए. The way he transformed himself is amazing. No, thank you so much. You know, commendable. उसके साथ में गीतिका जी बिल्कुल ही इनके साथ मैं क्या करूँ? You know, such a talented actor again. Actors wise, I'm not even commenting. Like मैं क्या बोल सकता हूँ? I'm blessed to be able to work with you guys at the outset. Only I said that. But Gitika, the way we were doing a जैसलमेर story, तो जैसलमेर के गांव में जाना, वहाँ पे जाके रहना, वहाँ के वर्ल्ड को अपनाना और इस तरीके से परफॉर्म करना कि you know you feel like you're a part of that world. I think commendable. Dance Rani की mother, the one who saw the dream, the one who made this small little girl see the dream. So fabulous. Gitika, I think, is superb. She doesn't talk in Hindi language mostly. You know, that's the other side of her. You know, सिर्फ शो में डायलॉग जब आते हैं तब वो हिंदी बोलती हैं. नॉर्मली उनकी इंग्लिश कहीं से उन्होंने एक्सेंट भी लिया हुआ है, वो मालूम नहीं. हरियाणा से. हाँ, हरियाणा से एक्सेंट लिया है. मैम प्लीज़ बताएंगे आपके एक्सेंट के बारे में. जी मेरा एक्सेंट इंग्लिश का है. हेलो, am I visible? Am I audible? Am I visible? मेरा एक्सेंट इंग्लिश का जो है that is from Haryana, and which is where I did my schooling from. This man has an exceptional ability of making you feel so wonderful about yourself that you continuously outdo your own better performances. So that's what he's doing right now. That's what he's doing to everyone. And yeah, मैं हिंदी में भी बात करती हूँ. हाँ, मैं हिंदी में ही बात करती हूँ, लेकिन मेरी टांग खींची जाती है. But I can comfortably shift gears. I think shifting characters, shifting gears, shifting seats, shifting spaces, that's what life is about, and that's what this show is about. How everything is changing, everything is evolving. And Javed ji spoke about nuclear energy. The nuclear power reactor is there, and all of us are like zzz. Electrons. Yes, we are electrons. No, thank you so much. Gitika, you're outstanding. It is just the beginning. You know, there is no one in the world can stop you from here. You know, it's a writing on the wall. You know, and that gets me to the nurse next to you. बहुत outstanding. हाँ? College सर कौन में भी सर एकदम सर outstanding आप थी. नर्स आउटस्टैंडिंग है सर? नहीं कॉलेज में भी आउटस्टैंडिंग थी वो. कॉलेज में. क्लास के बाहर ही खड़े रहती थी अच्छा, जब. सर मेरे को लगा आप फेटिश गर्ल आउटस्टैंडिंग बोल रहे थे आप. सर आप मेरे को लगा फेटिश गर्ल नर्स आउटस्टैंडिंग बोल रहे थे सर. आप अभी मिले थे ना बैक स्टेज उनसे. सर थैंक यू. So that comes to fetish girl. I think Plabita, the only person for fetish ever that I worked with was Plabita. There's nobody else I ever discussed fetish girl with. She's given her heart and soul like everybody else. But again, you know, playing a character like fetish is not something that's very easy.
You know, you need to be so comfortable in your skin. किस तरीके से आप उस कैरेक्टर को लाइफ लाते हो, बिकॉज इवेंचुअली ये सारे एक्टर्स जो हैं इन्होंने ही ये कैरेक्टर्स क्रिएट किए हैं. मैं तो वो पीछे बैठता हूँ. फाइनली आई ऑलवेज बिलीव दैट the actors eventually create the characters on screen. So thank you for owning Fetish Girl. Thank you for living like Fetish Girl. Thank you for being on a diet for 1.5 years. And because of all the COVID reasons. और हमने ये शो COVID के थ्रू शूट किया है. 1, 2, season 3 सारे जो आ रहे थे सबके थ्रू से. तो हम लोग ने किस तरीके से how she's maintained the focus for your character, because that's really difficult. It's easier to do one thing at a go, but to be consistent over a period of time takes a lot of extra effort. So Fetish, I think Plavita, you're fabulous. You're just who you are on screen. You've taken this whole what do you say, the personal aspect of Fetish Girl to another level. I think when people will see the story, they will get the other side of Fetish Girl, because like Sidharth said, it's a mirror to the world that we are witnessing today. जो दिखता है वो हमेशा वैसा होता नहीं है. हर चीज़ के पीछे कुछ ना कुछ और कहानी होती है. तो इस कहानी में Fetish Girl के थ्रू हम वो चीज़ देखेंगे. So I think it's very exciting. Thank you, Plavita. Thank you actually for giving me this opportunity. Like really, I never thought that I always wanted to play different kind of characters, but when I got to know about Fetish, I was like, what, really? Like, am I doing this? Because it is so exciting, and it is so, what I really enjoyed was that initially, what I really enjoyed is that I, as an actor, grew a lot through the show. Like, I started with feeling obviously like little awkward to play Fetish, and how I owned it eventually, and now I'm like, you want me to be Fetish? Oh yeah, here I am. But there's also one secret that I would like to tell everyone, that whenever I was confused about how to say this particular line in Fetish tone, I would just go to him, and Sidharth will be like, say it like this, and he will say it out, and I will copy him exactly. So a lot of the scenes, in a lot of the scenes, you will see me actually copying him. So he is somewhere the real Fetish, somewhere deep inside. So are you saying that I have an other side, which is like Fetish Girl? No, but have a but dark side. really, what I what really helped me was SKT that life. SKT life. SKT life. No, but really, what really helped me is that we had a fabulous crew, and that really helped me be extremely comfortable while being on set, and with all my Fetish costumes and the scenes. So that really helped also. So yeah, and I'm very happy, and I'm very excited for the world to see Fetish Girl and all the other characters. Thank you so much, Fetish. I think great times, and the girl next to you, just the opposite. ये एक child prodigy है मेरी आद्या. हाँ, ये मेरी आद्या है कि डांस रानी. जो करीब मतलब मैंने इतने child actors के साथ काम किया है in my journey so far, but I've never met someone like her. जिस तरह का preparation ये खुद करके आती है set पे, इसकी मम्मी के साथ में. इसकी मम्मी आज दिख नहीं रही है मेरे को. मैम आज भी डायलॉग्स करवा दिया आपने? सब रेडी है? हाँ, ओके बेटा. बट शी इज सच अ सुपरस्टार. आई थिंक जस्ट अ मैटर ऑफ आई ऑलरेडी जो काम तुमने किया है, मैं तुम्हारे बारे में क्या बोलूँ. आई लव यू बेबी. कुछ बोलने का है ही नहीं. जिस तरह से तुम प्रिपेयर करती हो, जिस तरह से परफॉर्म किया है, आई थिंक इट्स सिंपली ब्रिलियंट. थैंक यू. आध्या नहीं है, पूरिया है. And then there is Valusha. Jia, how are you, Jia? How are you feeling? Are your lines ready? Today we're talking in Hindi language, okay? Very important language for the world. Very, very important. And all your lines need to be in Hindi, okay? No, but it's a very strange relationship that I've had with Jia, in this journey. It's been actually a very strange relationship. When we started working, Jia as a character, the way Valusha came in to perform this particular character, and the way, the kind of effort Valusha puts it into behind every dialogue, every line is simply commendable. The kind of rehearsal she would do, every morning, that I've heard that Hindi teacher
is training her with the diction, you know, because that's not her natural language. But as a performer, this was a character which had English and Hindi. It was not only a rural-based character. So it was perfectly fine from a performance standpoint. But she over-preps. If I prep, you know, we need to meet her, and Sidharth knows everything any which ways, you know. So the way you approach Jia and the way you got it to life and the way every aspect of your journey with Escape Live, how was it? First, I have to say thank you very much for actually looking and seeing Jia in me. I've had an amazing journey all through Escape Live, and like some of them have said, I have grown. I think we've spent 2.5, 3 years nearly on this show, a lot of heart going into it. Just very grateful that you saw that I was able to bring Jia to you. Also very easy prepping for this, although a lot of people thought it was really difficult. Let me tell you, I had everything that Jia is SKT. So if she has a little sarcasm in her, it comes straight from there. सब आपके character से लगता है. Everybody will agree. यहाँ से हॉस्पिटल सर आपके अंदर काफी कैरेक्टर्स हैं और सारी लड़कियां हैं. इंटरेस्टिंग. अच्छा वो आपने नहीं कहा ये कि मेरे अंदर राइट भी वो है. क्या कैरेक्टर है? No, but it was actually, I mean, you know, he really helped. And the thing that's really special about Sidharth is he has so much of patience. And he has this innate way of saying, oh, this is how you want to play the character? No problem. Tell me how you'll play it. So then you'll spend half an hour saying, you know, this is how I see the character. This is what I want to bring to it. Acha, okay. Now we've wasted 30 whole minutes on this. Then he says, but this is how I see. So you'll play it like this. So then you have to say, okay, no problem. But every day he did this, every day, every single day. We came in and me for sure, I know a lot of people around me had suggestions on this is how I should play it, this is how I should see it, and he gave us the time. So thank you for that. Thank you for letting us explore and then somehow coming right back to your vision. Thank you. No, I want to genuinely say this without any thing. You know, I feel that all of you, if you did not believe in what you were playing on screen 100%, it wouldn't be what it is, you know. So it's very important for every actor to, from my perspective, to believe in the characters that they are playing. So I would hear you for you to believe more in what you're doing. So, I believe and all you. of you. And I I would really believe you. want that. Yeah, because Even eventually... there's a little hint of sarcasm. See, I listened to you, but then I did it my way. It's an honor, you know, it's an honor. But I feel that if you guys didn't perform the way you guys have performed, this series wouldn't have been half of what it is today. As actors, you guys build characters. When people see you on screen, I think the value that you get to the table for me is priceless. So I'm very selfish. I'm only wanting things to go a particular way. I want the best out of all of you. And I'm so glad that I've got that. Thanks, Sidharth. Thanks for your patience, most importantly. Thank you, Jia. Mama, ये हमारे जगजीत संधू जी हैं, you know, हमारे मामा जैसलमेर स्टोरी के मामा ने मुझे बहुत एंटरटेनमेंट भी दिया है जैसलमेर में. The way Mama preps for his characters is very different than how anybody else preps for his characters. You know, he is जब हमने मामा के कैरेक्टर के बारे में बात करना स्टार्ट किया तो बहुत इजी था मुझे उसे एक पर्टिकुलर तरीके से दिखाना. पर जिस तरीके से जगजीत फ्रॉम द टाइम यू नो वी स्टार्टेड वर्किंग ऑन इट, और जब हमने बात करना स्टार्ट किया कि हम किस तरीके से मामा को प्रेजेंट करेंगे, क्योंकि वो एक ऐसा कैरेक्टर है जिसमें प्यार है पर फिर भी इंसान है, तो वो वाला जो एस्पेक्ट है वो जो मामा ने करेक्ट किस तरीके से जो सुर पकड़ा है, एंड द वे ही ऑल्सो दिस इज़ वेरी गुड सीन विद मामा अगेन, जहाँ मामा अपनी लाइंस अपने आप ही जोन में आते हैं तो वो अपने आप ही बोलते हैं 2-4 मिनट, और and the way he performs. Mama, what do you feel? कैसा रहा आपके साथ? थैंक यू सो मच सर. इस एस्केप लाइव की दुनिया में छोटा सा गांव जैसलमेर में हमारा भी है. हाँ, वो लाइंस मुझे याद है. एक सीन था उसमें मुझे बोला गया था कि सिर्फ 2 लाइंस लेनी है, उसके बाद कट कर देंगे. तो सर बहुत मुश्किल से कट बोलते हैं, तो वो कट नहीं हुआ, तो लाइंस चली गई, 2 मिनट आगे चली गई. तो उसके बाद वो कंटिन्यूटी वाला एक आता है जो बाद में आके एक्टर को बोलता है, भाई ये तूने ये कर दिया है.
मैंने लाइन बोल दी लेकिन बाद में वो मुझे याद करनी पड़ी सर ने बोला अब तू याद कर इसको, तूने क्या क्या बोला। थैंक यू सो मच सर। पहले तो नंदू मामा, तो ये करैक्टर कुछ ऐसा है कि इससे पहले जितने भी मामा रहे हैं, चाहे वो महाभारत हो, चाहे कहीं भी हो, तो वो थोड़े कमीने टाइप दिखाए गए हैं। ये मामा कैसा है अभी मैं नहीं कह सकता कि इसको मैं किस कैटेगरी में रखूं। थैंक यू सो मच सिद्धार्थ सर मुझे यहाँ लाने के लिए, और स्पेशली एक दूसरे की कहानी के बारे में हम कोई नहीं जानता, ना मैं जानता हूँ, लेकिन पहली बार जब हम मिले थे पार्टी पे तो मुझे लगा यार ये अपनी दुनिया है। जानता भी नहीं था मैं क्या कहानी है, किसने क्या किया होगा, वो एक्साइटेड हूँ देखने के लिए किसने क्या क्या किया है, लेकिन एक लगता है कि ये पूरी एक फैमिली है, तो ये दुनिया है एस्केप लाइफ की। थैंक यू सो मच सर यहाँ लाने के लिए। थैंक यू मामा। जावेद सर के बारे में आई डोंट नो व्हाट टू से, यू नो आई थिंक आई हैव रियली ग्रोन अप ऑन वाचिंग यू। मुझे तो लगता है आधा हिंदुस्तान यही बोलता है सर वी हैव ग्रोन अप वाचिंग यू। सर प्रॉब्लम क्या है ना सर, मैं आपको बहुत बताता अच्छे हूँ। ग्रो अप हुए हो सर तुम यार। प्रॉब्लम आपका नहीं है सर, प्रॉब्लम बिल्कुल ही आपका नहीं, हम लोगों का है। वी ऑलवेज वांट टू फील यंगर, वी वांट टू से दैट वी हैव ग्रोन अप वाचिंग यू, दैट मींस वी आर यंगर टू यू। सर इट्स आवर कॉम्प्लेक्स सर, आप बिल्कुल इन पे मत जाना, ये सब ऐसे ही बोलते हैं लोग हमारे जैसे। नो बट जावेद सर, मैं यू नो I've had the opportunity to be a fly on the wall when in my earlier days of my career where I used to work with a broadcaster, and I have seen you work from a distance, and I thought that you know possibly someday we would work together at that point in time. And post that for this series I needed a personality who could actually drive this Escape Live, the app world, the world of Escape Live, because एक कॉन्टेस्ट ही सिर्फ अनाउंस नहीं हो रहा है, उस कॉन्टेस्ट के पीछे बहुत सारी और भी चीज़ें होती हैं जो हमने अपनी करियर्स में देखे हैं इस इंडस्ट्री में। सो उसको करेक्ट तरीके से दिखाना था, उसके लिए needed somebody who could have that weightage, the power, the authority. And more importantly, if you say something on screen, you know, it feels like it's serious. It means business. So you are in the business of entertainment, running the app called Escape Live. You're the CEO of this app, and thank you, sir, for working with us and making this reach here today. No, what I said when I said in the beginning, जब मैं पहली बार मिला था तो मैंने इतना पैशन देखा उसमें, और मेरे लिए खुशकिस्मत की बात है कि आपने मुझे ऐसे रोल में सोचा जो थोड़ा सा मतलब नॉर्मली कनेक्शन होता है कॉमेडी फनी, बट यू थॉट नहीं इज अ वेरी सीरियस कैरेक्टर, कॉमेडी करता ही नहीं है कैरेक्टर, एंड थैंक यू फॉर थिंकिंग ऑफ मी लाइक दैट। और एक और बात, एक्टर के लिए बहुत ही एक खुशकिस्मती की बात होती है जब एक डायरेक्टर मिलता है जो कहता है और बहुत क्लियर है अपने हेड में कि सर इसको ऐसा कर लेते हैं, बिकॉज एक्टर फिर बियॉन्ड अ पॉइंट फिर वही करने लगता है, एंड देन यू हैव टू बी लाइक क्ले कि भाई ओके आप डायरेक्टर हैं, आप मुझे मोल्ड करिए, क्या बनाना चाहते हैं मुझसे, आपने क्या से, आपकी क्या एक सोच है। तो दैट्स व्हाट यू डू ब्रिलियंटली, यू नो एग्जैक्टली, बिकॉज यू आल्सो रिटन इट एंड ऑल ऑफ देम हैव सेड द सेम थिंग, कि यू नो हाउ टू मोल्ड ईच कैरेक्टर and you know who's playing what in the orchestra. So you play here, you play this, and you know how it'll play together. So to get somebody कि सर यहाँ पे ज़्यादा हंसिए मत, यहाँ पे कीप द स्लाइट स्माइल और थोड़ा सा लुक देना, विच बहुत बारीक चीज़ होती है, एंड इट इज़ सो रिफ्रेशिंग, एंड एक एक्टर की एक बहुत खुशी होती है कि एक